Today I'll be discussing MySQL table with you people, the exact pattern which is expected in the board, right? Uh, is the page visible to everybody? Nikhil, Bhima, Manav, is the page visible? All right. I give you 1 minute. Go through this table. As per the CBSE pattern, you have a comprehension type question of MySQL. You will be having two tables and you will be having questions that will be in connection to that table. You have for 4 questions, you have to make SQL commands, and for the rest of the 4 questions, command will be given. You have to give the answer of that command. I show you what I mean by my statement. For 4 questions, you have to create the MySQL command. And for the next 4 questions, command will be given to you. You have to trace out the answers from the table. Right? I give you 1 minute. Go through the table minutely so that we can start the command. One complete question I will solve. You just view, observe. Next question I'll be sending you as assignment. We have table train. First table is train, which is having the fields train number, train name, start and end. I have a second table, passenger, PNR, passenger number, TNO. TNO field of passenger table is common with the train table. I told you in the earlier classes that when we are working with the joins, we have one field common. So here I have T number, T number field here in the train table and the same field number, field name in the passenger table. So if any join command will be there, so you will be using this field as a common field. Now, I have a start field here and I have passenger name, gender, age and travel date. Right? If up till here I am clear, please raise your thumb. All right, let's start the questions. First question, please अपने सामने आप एक notebook भी रखो. All of you keep one notebook open in front of you. I will be discussing command here. Correspondingly, you write the command in your notebook also. To display details of all the trains which start from New Delhi. Looking at the statement, you have to make out one thing, that whether you are to pick up the single table or whether you are to create joins. Right now it is on the single table. To display the details of all the trains which start from New Delhi. So train table में जाएंगे, ये हमारा start field है. वो क्या कह रहा है, उन सभी ट्रेन्स की डिटेल चाहिए जिनका स्टार्टिंग एरिया न्यू दिल्ली है. So the command will be select. आपने ये हैश नहीं डालना, ये हैश सिर्फ मैंने डाला है. डोंट पुट हैश. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन. ट्रेन्स है कि ट्रेन है, ट्रेन्स, where start equal to New Delhi semicolon.
How many times this Karthik is entering and exiting from the class? Select star from trains where start equal to New Delhi. Right? जब भी आपको डिटेल पूछा जाएगा, whenever in question you have the word detail, detail means asterisk. Detail means asterisk. Now in the second question, to display PNR, P name, gender and age of all passengers whose age is below 50. Whose age is below 50. So I have to go to the passenger table and all the fields PNR, P name, gender and age. All these 4 fields are available in the passenger table, but I have to display these fields only for those persons whose age is below 50. That means I have to use the relational operator over here. Select PNR, comma P name, comma gender, comma age from passenger. Passengers है कि passengers है? Where age less than 50 semicolon. Select PNR, comma P name, comma gender, comma age from passengers where age less than 50. Am I clear up till here? In any doubt in these 2 commands? Am I clear? Let's proceed further. To display total number of male and female passengers. अब यहां पर हम group by command चलाएंगे. What he is telling you, you are to identify, you are to count how many total male passengers are there, how many total female passengers are there. Now in group by, you have a group that you create from the table. All the related items you put in one group. Now when we will be counting all the males, we'll be giving one figure that will represent all the males. Similarly, we'll be giving one number that will represent the total entry of the females. But in the whole criteria, our column will be gender. हमारा focus जो होगा group by में वो gender column पे रहेगा. So command will be select gender, comma count star. जब भी आप ग्रुप बाय कमांड चलाएंगे काउंट स्टार की एंट्री आएगी ही आएगी, बिकॉज आप काउंटिंग कर रहे हैं टोटल रिकॉर्ड्स की. Whenever you are to count the total record, we take count bracket star function from passengers group by gender semicolon. जैसे ऑर्डर बाय किसी फील्ड के बेस पे होता है, ग्रुप बाय कमांड भी किसी फील्ड के बेस पे होती है. राइट? सो इसका आंसर क्या होगा अगर हम इसको MySQL में इंप्लीमेंट करें? व्हाट आंसर आई विल गेट? मेल मेंबर्स 1 2 3 4 एंड 5. मेल 5, 1 2 3 4. फीमेल 4. मेल 5, फीमेल 4. राइट? Next, display detail of all passengers traveling in train whose TNO is 12015.
उस ट्रेन नंबर है 12015, इस ट्रेन नंबर में जो जो पैसेंजर्स सफर कर रहे हैं उनका डिटेल चाहिए. सो कमांड विल बी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स where TNO equal to 12015. Select star from passengers where TNO equal to 12015. Have I made myself clear up till here thoroughly? All right, let's proceed further. Now, I told you for the 4 questions, you have to create the SQL command. But for the next 4 questions, command will be given to you. You have to write the answers, but answers you will see from the table. Right? First, select maximum travel date, comma, minimum travel date from passengers where gender equal to female. आपको मैक्सिमम ट्रैवल डेट फाइंड आउट करना है, आपको मिनिमम ट्रैवल डेट फाइंड आउट करना है from passenger table, but your condition is gender should be female. So let us proceed to the passenger table, and we will be putting our attention only to the gender female record. First female record is this. Let us find the date 2018-11-10. Next female record is this 2018-10-12. First of all, see the year. Pick up the highest year. If year is same, go for the highest month. If month is same, then go for the date. Next entry for female record is 2018-10-12. Same date. And the last is this 2018-05-09. So years are same. In every record, year is 2018. So let us proceed for the month. The highest month in the female record is 11th. That is November. So this is going to be the highest maximum date. So maximum date is 2018-10. This is the maximum date. Now we go for the minimum date. The minimum date will be the last one, the 5th month. 2018, 5th and 09. This is going to be your minimum date. Am I clear? Up till here, am I clear? All right. Now moving to the next command. Select end. Count star from trains group by end having count star more than 1. अब इसका मतलब क्या है? ट्रेन्स टेबल में जाना है, वहां पर एक एंड नाम की फील्ड है, उस एंड नाम की फील्ड में ग्रुपिंग करना शुरू करना है कि कौन सी एंट्री कितनी बार अकर हुई है। पर ग्रुपिंग सिर्फ उन वैल्यूज की करनी है जिनकी अकरेंस 1 से ज्यादा बार है। जो एंट्री 1 से ज्यादा बार है उसकी ग्रुपिंग करनी है। अगर किसी एंट्री की काउंटिंग सिर्फ 1 है, उसको कंसिडर नहीं करना। सो वी प्रोसीड टू द ट्रेन्स टेबल
and this is our end field, and these are the values of the end column. अहमदाबाद जंक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे. अजमेर जंक्शन दोबारा काउंट हो रहा है, नहीं, इसको भी काउंट नहीं करेंगे. हबीबगंज, हबीबगंज 2 बारी आ रहा है, तो वी विल टेक दिस. हबीबगंज 2, हबीबगंज की एंट्री 2 बार है, हबीबगंज 2. लेट अस प्रोसीड अगेन. हबीबगंज के बाद अमृतसर जंक्शन, ये भी 2 बार है. तो इसका भी हमने वैल्यू डाल दी. नेक्स्ट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 4 बार है. सियालदा, सियालदा की एंट्री एक ही बार है, तो ये नहीं आएगा. सो दिस इज योर आंसर. एनी डाउट? प्लीज थंब जरा जल्दी रेस करो, मुझे अभी और क्वेश्चंस भी करवाने हैं. आई शुड गेट टू नो द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल. किरत, दक्ष, खुशी, पवनीत, यशदीप, आर यू ऑल हेयर or sleeping? No thumbs are raised from you people. Fiza, are you here in the class? Avneet, Fiza, Jasjot, Om, are you here? All of you? All right. Now next question. Select distinct travel date from passengers. Distinct, I told you, distinct का मतलब होता है डुप्लीकेट हटा के. डुप्लीकेट हटा के एक वैल्यू को एक ही बार लेना है. अब यहां पर काउंट नहीं लगा हुआ. अगर काउंट लगा होता तो हम वैल्यूज को काउंट करते. यहां पे सिर्फ लिखा है डिस्टिंक्ट ट्रैवल डेट. दैट मींस in the travel date column you have to write each value, but if the value is occurring more than once, do not count it again. One entry, one counting. Travel date is here. So first date is 2018 12/25. Second entry 2018 11/10 2018 11/10. ये 2 बार ही आ रहा है, हम एक ही बार लिखेंगे. टू 2018 10/12 2018 10/12 2018 10/12. 3 बार ही अकर हो रहा है, हम एक ही बार लिखेंगे इसको भी. And the last entry will be 2018 0509. ये भी 3 बार ही आ रही है, हमने एक ही बार लिखा है. So this is our answer. Clear? Up till here, thoroughly clear? All right, last question. Now this question is based on the joins. This question is based on the joins command. Select T name and passenger name. अब 2 टेबल्स को रेफर करना पड़ेगा क्योंकि T नेम ट्रेन में है, P नेम पैसेंजर में. फ्रॉम ट्रेन्स T, पैसेंजर्स P. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में, टेबल का नाम बार बार ना लिखना पड़े तो हम टेबल के एलाइसिस क्रिएट कर देते हैं. Instead you write table name again and again, we create aliases of the table. So T is the alias of train, P is the alias of passenger. Where TNO of train is equal to TNO of passenger, or second condition क्या है, and second condition
एज शुड बी बिटवीन 50 एंड 60। 50 से 60 के बीच में एज होनी चाहिए। जिनका TNO मैच कर रहा है उनका ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम और पैसेंजर का नाम बताइए। लेट अस गो टू बोथ द टेबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू सी एज 50 to 60. फर्स्ट एंट्री इज दिस 52, NS सिंह। NS सिंह का ट्रेन नंबर क्या है? 13005। 13005 ट्रेन नंबर की एंट्री ये रही, अमृतसर मेल। अमृतसर मेल। So answer will be NS Singh. This is the first entry. Now next 65. 65. No, sorry, this is above 60. ये नहीं आएगा। 58. R शर्मा। R शर्मा, इसका ट्रेन नंबर है 12030। 12030 का ट्रेन नाम है स्वर्ण शताब्दी। R शर्मा, शताब्दी। Here your table goes finish. Have I made thoroughly clear with the table? Entire table is clear to you people? All right. Now I proceed to the next concept of the day. I want to discuss with you people one output question based on function concept. Is the question visible? Is the Python question visible to all? Only Bimang raised the thumb as and when I put any query. Rest of you, I think, sleeping in the class. All right, let us quickly start the question. I make the working notes over here. आपको जब भी फंक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा, फंक्शन का ब्लॉक बना होगा, पर आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू होगी मेन प्रोग्राम से। दिस इज द मेन प्रोग्राम। जो फंक्शन का हिस्सा नहीं है वो मेन है। यहां से आपके क्वेश्चन की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। आई हैव द वेरिएबल ए हुज वैल्यू इज 250। आई हैव द वेरिएबल बी हुज वैल्यू इज 150। मैंने फंक्शन इन्वोक किया, कन्वर्ट फंक्शन, and I pass the parameters a and b. They are actual parameters. So a will take the value 250, b will take the value 150. Both of these variables हमने यहां ट्रांसफर किए। यहां पे पहले से ही डिफॉल्ट पैरामीटर थे। x को डिफॉल्ट दिया 45, y को डिफॉल्ट दिया 30, पर हमने जब फंक्शन कॉल किया हमने वहां भी वैल्यूज भेजी। हमारे द्वारा दी गई वैल्यूज ने डिफॉल्ट को ओवरराइड कर दिया। So a will be going to x and b will be going to y. So x will take 250, y will take 150. X plus y equal to x. So that means 250 plus 150 equal to 400. So x will take the value 400. Now next is y equal to x minus y. Now x will take the new value 400, y will take the value 150 because y is 150 over here. So y comes out to 250. Am I clear up till here? Am I clear? So now print x and y. So first answer will be, your first answer will be 400 and 250. Return x. x को रिटर्न करवा रहे हैं, x की वैल्यू 400 है, 400 रिटर्न हो गया, रिटर्न होके वैल्यू a में स्टोर हो गई। तो जब ये वाला प्रिंट
स्टेटमेंट चलेगा तो A will be printed 400, B will be printed 150. B will be printed 150. Now, convert function again called with only parameter B, only B parameter. B will take the value 150. B will take the value 150. Now, this single value will override the value of X. ये सिर्फ X को गई है वैल्यू, ये X को override करेगा, Y 30 का 30 ही रहेगा. So X हमारा हो गया 150. X हमारा हो गया 150, राइट. Y हो गया 30. So X क्या हुआ? 150 plus 30. So that comes out to 180. X print हुआ 180. And X minus Y, 180 minus 30. 180 minus 30, 150. तो Y क्या प्रिंट हुआ? 150. रिटर्न क्या किया? रिटर्न X किया. X की वैल्यू क्या है? 180. 180 रिटर्न होके B में आके स्टोर हो गया. जब फंक्शन ने अपना काम खत्म कर लिया, वापस वहीं पर आएगा जहां से कॉल हुआ था. And my value 180, it gets stored into variable B. So A will be printed here 400. A will be 400 as the previous value. B will be 180. B will be 180. Right? Now, next again we call the convert function, but this time we call with the A. A will take the value 400. 400 goes to X. Y will take again 30 value. So X is 400, Y is 30, X total becomes 430. X become total 430. Now 430 minus 30. 430 minus 30. Y will be 400. Y gets 400. So it is 430 and 400. Return X. I return X. X is 430. 430 will return back and stored in A. So A will take the new value 430 and B will take the value 180. Clear? Totally clear? I show the output to you people. See the output. Right?